Hi guys, welcome back to my channel. My name is Soumya. So today we are going to do a Nykaa haul. This haul is going to be a Jan haul because जितने सामान है वो सारे के सारे जनवरी में आए थे. So yeah, I don't brought too many things. This is all the things that I brought, and yeah. Before starting the video, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. If you like my content, follow me on Instagram, and yeah, let's start with the video. So this is the all things that I brought. So let's start with the brush. Pack concealer brush, pack 219. I have used, मैंने आज इसको use किया, and I fell in love with this one. Like this have taken my heart, by the way. And this retail for 295. I think से मैंने कुछ discount पे लिया था. And this is my first pack का brush, and I know why these brushes are so famous. और सारी चीजें हैं वो मैंने elf की ली हैं. So basically this is the elf का bit size eyeshadow in a shade creamy cakey, I think say, if I'm not wrong. Let me check. By the way, I will mention here कौन सा shade है. By the way, ठंडक बहुत हो गई है, so I just put this coat on. This is all the shade I have here. This is both shimmer wale and matte wale. I have just used this one. I really like the shimmer shade. Like मुझे shimmer shade बहुत अच्छे लगे. मैं ना ऐसे शेड के चक्कर में रहती हूँ जो मेरे ऊपर मुझे थोड़े से बटरी हो, नॉट पाउडरी हो. They are the same, and I think say I really like this one. And मैं इसको in a future I feel like इसको ज़्यादा यूज़ करते देख रही हूँ. Now moving on to the other eye product. This is the elf wow brow volumizing fiber gel. This is how the packaging look like. इस पे इतने दिनों से मेरी नजरें थी, but it always went like out of stock. Basically this color natural brown, and today I have used this one. I have not used any pencil or pomade and बस मैंने इसको यूज किया. By the way, it have like a some kind of fiber in it जो कि आपके ब्राउ को फुलर बनाते हैं, and it looks so sleek. Like I mean this looks so beautiful. छोटू सा इतना प्यारा सा है. मतलब मैं इतनी कंट्रोल की हुई थी अपने आप को यूज करने से. बाकायदा मैंने आज यूज किया. इफ यू कैन सी इट हैव लाइक सम काइंड ऑफ हेयर इन इट. एंजॉय ओवरऑल, बट आई थिंक से थोड़ा ट्राई करके ही मैं बता पाऊंगी कैसा है. द लास्ट थिंग आई ब्रॉट दिस एल्फ का बिट साइज फेस टू. बेसिकली एक तरफ हाईलाइट. दिस इज द ब्लश एंड दिस इज द हाईलाइटर. This is how it looks like. But ये shade in a apple spice. I really don't want this shade, but जो मुझे shade चाहिए था वो out of stock था. I really want their watermelon वाला shade. I was like I'm on it, but जब भी मैं उसको लेने चलती थी they are out of stock, और जब भी वो होते थे तो they are on a full price, and I really want to buy full price पे. And I really like the इनका जो blush I really like, but ये हाइलाइटर मेरे चेहरे पे नहीं चल रहा, माई स्किन पे नहीं चल रहा. सो या दिस इज द ब्लश एंड दिस इज द हाइलाइटर. आई रियली लाइक द ब्लश, नेचुरल है. सो दिस इज ऑल द थिंग आई ब्रॉट. आई नो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट सिंस आई टोल्ड यू आई विल मेक अ लाइक काइंड ऑफ सीरीज. So yeah, this is going to be a Jan series. Hope you enjoy this video. This is a short video. Before you wondering what I'm putting on my lips, just go watch. इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है basically try on haul, उसमें मैंने बताया ये कौन सी लिपस्टिक है. So this is we are end of this video. If you haven't followed me on Instagram, do follow me on Instagram and subscribe to my channel. Like this video, comment down कि कैसा लगी आपको वीडियो. I've been trying to regular put on a video. Like मैं रेगुलर हो रही हूँ वीडियो को पुट करने में. Like इतनी ठंडक हो गई है रात में. Like you can see around me. यहाँ पे मेरे पास जैकेट हीटर सामने रखा हुआ है, and I can't use it anything. And रात के 1 बज रहे हैं. It is really cold here in Bahraich, and my hands and legs are freezing, and I'm a cold baby. ठंड बहुत लगती है मेरे को, but yeah,
I will see you guys next time with a new video. तब तक के लिए बाय बाय.